नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सलामती कौंसिल की तरह फ़ैसला करने वाला फ़ोरम तो नहीं है, लेकिन हर साल इसमें आलमी रहनुमा जो खिताबात करते हैं उसमें मुताल्लिक़ा मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी और तरजीहात का अहाता किया जाता है और इन तकरीरों के तज्ज़िये से ही आलमी सियासत और तनाज़ात के रुख का तयन किया जा सकता है। अगर मजमूई तौर पर अहम ममालिक के रहनुमाओं की तकारीर का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि इस वक्त आलमी सतह पर भी अनारकी जैसी सूरत हाल है और रिवायती हरीफ़ों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ आस्तीनें चढ़ा दी हैं या फिर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर से वाज़ेह होता है कि मुस्तक़बिल करीब में अमरीकी तोपों का रुख सिर्फ चीन की तरफ होगा, क्योंकि चीन वाहिद मुल्क है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कोविड-19 से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों के लिए चीन को ज़िम्मेदार करार दिया। As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China. The United Nations must hold China accountable for their actions. डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में चीनी सदर ने रिवायती संजीदगी का मुजाहरा करते हुए उनकी तरह जारहाना लहजा इस्तेमाल करने से तो गुरेज किया, लेकिन अमली इक़दामात का जिक्र करके डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर का मुँह तोड़ जवाब दिया। China is actively involved in the international fight against COVID-19, contributing its share to upholding global public health security. Going forward, we will continue to share our epidemic control practices as well as diagnostics and therapeutics with other countries, provide support and assistance to countries in need, ensure stable global anti-epidemic supply chains, and actively participate in the global research on tracing the source and transmission routes of the virus. At the moment, several COVID-19 vaccines developed by China are in phase 3 clinical trials. When their development is completed and they are ready for use, these vaccines will be made a global public good and will be provided to other developing countries on a priority basis. We should reject attempts to build blocks to keep others out and oppose a zero-sum approach. We should see each other as members of the same big family, pursue win-win cooperation and rise above ideological disputes and not fall into the trap of clash of civilizations. दुनिया की एक और बड़ी ताकत यानी रूस के सदर ने भी अमरीकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। We are engaged in negotiations with our US partners on the matter. We also expect that mutual restraint would be exercised with regard to deploying new missile systems. I would like to add that as early as last year, and I emphasize this, Russia declared a moratorium on deploying ground-launched medium and long-range missiles in Europe and other regions, as long as the United States of America also refrain from such actions. Unfortunately, we have not received any reaction to our proposal from either our US partners or their allies. बदकिस्मती से मशरिक़ वस्ता के मुतहारिब फ़रीक़ों ने माजी की तरह एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कतर ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों पर तनकीद के साथ साथ इज़राइल की भी खबर ली। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी तोहफ़ों का रुख अपने रिवायती हरीफ़ों की तरफ रखा। अरब दुनिया के कायद सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने ईरान पर शदीद तनकीद इन अल्फाज के साथ की। Over the past decades, the kingdom's hands were extended openly and positively to Iran, searching for peace, but to no avail. The kingdom received several of Iran's presidents and other senior officials in line with the kingdom's efforts to seek ways to build relations based on good neighborliness and mutual respect. We welcomed an international effort to address Iran's nuclear program. But time and again, the entire world witnessed how the Iranian regime abused these efforts to fuel its expansionist activities, build its terrorist networks, and use terrorism. In the process, it squandered the resources and wealth of the Iranian people to fulfill its expansionist project, which only brought about chaos, extremism, and sectarianism.
The Iranian regime, conforming with its hostile attitude, targeted oil facilities in the kingdom last year in a blatant violation of international law and international peace and security. जवाब में ईरानी सदर ने अमेरिका को फसाद की जड़ करार देते हुए मिडल ईस्ट और ख़ित्ते में बेचैनी और जंगों की जिम्मेदारी अमेरिका और उसके अरब इत्तेहादियों पर डाल दिया। They are directly involved, along with the regional accomplices, in every single case of occupation, war and aggression, be it in Palestine, Afghanistan, Yemen, Syria, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan or Somalia. Yet they blame Iran for their own inevitable defeats in confronting the will of the people of the region. They have sold hundreds of billions of dollars of weapons to their clients, turning our region into a powder keg. अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने अपने मुल्क के मसाइल की तरफ आलमी तवज्जो मबजूल कराई और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल का तफसील के साथ जिक्र किया। उनकी तकरीर में पाकिस्तान के लिए खुशाइंद अमर ये था कि पहली मरतबा अफ़गान सदर की तकरीर में पाकिस्तान पर ना तो खुले अल्फाज में तनकीद हुई और ना दबे अल्फाज में। As a state and society, we've demonstrated the commitment, compassion and courage to take hard decisions to start direct peace talks with the Taliban. This won't be enough. For sustainable peace in Afghanistan, we must get to the roots of the terrorism problem, blighting our region, and address it as the global phenomenon and threat that it is. The untold sorrow of the Afghan people, particularly our women and children, during the last 40 years serves as a reminder of the relevance of the UN Charter and also of its unfulfilled promise of maintaining international peace and security. यूएन जनरल असम्बली के गुज़श्ता इजलास में 3 इस्लामी ममालिक यानी तुर्की, ईरान और मलाइशिया ने कश्मीर का जिक्र किया था, लेकिन बदकिस्मती से अब के बार ये तादाद सिर्फ 1 हो गई और सिर्फ तुर्की के सदर ने कश्मीर का तज़किरा ज़रूरी समझा। Güney Asya'nın istikrar ve barışı içinde kilit önem taşıyan Keşmir sorunu halen çözüm bekliyor. Cammu Keşmir'in özel statüsünün ilgasının ardından atılan adımlar sorunu daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu meselenin diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve özellikle Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesinden yanayız. अगरचे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के जज्बाती ख़िताब के मुखातिब अब के बार भी ज़्यादातर पाकिस्तानी ही नज़र आ रहे थे, ताहम उन्होंने कश्मीर का केस इंतहाई जज्बाती और मुदल्लल अंदाज में पेश किया। On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights, communications from the Special Rapporteurs of Human Rights Council, statements from human rights and civil society organizations. The international community must investigate these grave violations
and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity. توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے جارحانہ تقریر کے جواب میں ہندوستان کے نریندر مودی بھی جواب میں پاکستان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن کسی بھی طرح کے اخلاقی جواز سے محروم نریندر مودی نے اپنے مختصر خطاب میں شاید شرمندگی کی وجہ سے نہ تو کشمیر کا ذکر کیا اور نہ پاکستان کا، بلکہ اقوام متحدہ کی تشکیلی نو پر زور دیا۔ ناظرین، عالمی رہنماؤں کے خطابات اور ان کے ٹون سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سیاست کی طرح اس وقت عالمی سیاست بھی حد درجہ پولرائزیشن کی شکار ہے۔ اس پولرائزیشن میں کمی لانے یا اس کو مزید بڑھاوا دینے میں جو ملک سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے مستقبل کی پالیسیوں کا زیادہ تر انحصار نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر ہیں۔